जय जगन्नाथ टॉपर्स एमसीक्यू रे आपण मानक स्वागत। आज रे वीडियो रे आमे ओ ट्रिपल एससी रो सेवक सेविका एंड टीएलटी एग्जाम पई करेंट इवेंट ऑफ ओडिशा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एवरीडे साइंस रो बछा बछा मोस्ट प्रोबेबली 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करबा। तो वीडियो टी को स्टार्ट करिया पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सो लेट्स स्टार्ट। First question: The Battle of Kalinga was fought during the reign of which Mauryan emperor? क्यों मौर्यन एम्परर समय रे कलिंग युद्ध होइतिला? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, दशरथ मौर्य। यार राइट आंसर है अशोका। अशोक समय रे कलिंग युद्ध होइतिला। द बैटल ऑफ कलिंग वाज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which inscription provides the earliest reference to Kalinga as a distinct political entity? केउं शिलालेखरे कलिंग को एक स्वतंत्र राजनैतिक सत्ता भाव सर्वप्रथम उल्लेख करा जायछि? हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, अशोकन रॉक एडिक्ट एक्स ट्रिपल ए, अहिहोली इंस्क्रिप्शन। राइट आंसर इज अशोकन रॉक एडिक्ट एक्स ट्रिपल ए। अशोकन रॉक एडिक्ट एक्स ट्रिपल ए inscription provides the earliest reference to Kalinga as a distinct political entity. Next question: Which of the following rivers crosses the Tropic of Cancer twice in India? भारतर केउं नदी दुई थर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करिछि? नर्मदा, माही, तापी, साबरमती। राइट आंसर इज माही। माही रिवर crosses the Tropic of Cancer twice in India. Next question: The Madala Panji is an important historical chronicle of dash. मादला पांजी काहार एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक इतिहास? द सोमवंशीस, द गजपति किंग्स, द भौमकरस, द भोई डायनेस्टी। राइट आंसर इज द गजपति किंग। द मादला पांजी इज एन important historical chronicle of the Gajapati kings. The famous Konark Sun Temple was built during the reign of which ruler? फेमस कोणार्क टेम्पल केउं राजांग समय रे तैयारी होइतिला? चोड़गंग देव, कपिलेन्द्र देव, नरसिंह देव 1, मुकुंद देव। राइट आंसर इज नरसिंह देव 1। द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिंह देव 1। नेक्स्ट क्वेश्चन: Who was the first ruler to unify the Odia speaking regions into one political unity? ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी को गोटे राजनीतिक यूनिटी रे एकत्रित करिबारे प्रथम शासक किए थिले? अनंत वर्मन चोड़गंग, गजपति कपिलेन्द्र देव, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, खारवेल। राइट आंसर है महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति was the first ruler to unify the Odia speaking regions into one political unity. Next, which district of Odisha has the highest percentage of forest cover? ओडिशा रे केउं जिल्ला रे हाईएस्ट परसेंटेज रे जंगल अछि? कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़, रयागढ़। राइट आंसर इज कंधमाल। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच विटामिन इज मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग? रांधिबा द्वारा केउं विटामिन सबुठु सहजरे नष्ट होई जाय? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर इज विटामिन सी। Vitamin C is most easily destroyed by the cooking. Next question: The famous cave inscription of Kharavela are found in dash. खारवेल प्रसिद्ध केव इंस्क्रिप्शन केउंठारे देखिବାକୁ मिले? उदयगिरी एंड खंडगिरी, रत्नगिरी, ललितगिरी, धौली। राइट आंसर इज उदयगिरी एंड खंडगिरी। The famous cave inscription of Kharavela are found in Udayagiri and Khandagiri. Next question: The famous Chhau dance of Odisha originate from which region? ओडिशा रे प्रसिद्ध छौ नृत्य केउं अंचल ओरिजिनेट होइछि? मयूरभंज, संबलपुर, गंजाम, कोरापुट। राइट आंसर इज मयूरभंज। द फेमस छौ डांस ऑफ ओडिशा ओरिजिनेट फ्रॉम मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन: मुकुंद देव द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी? ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा मुकुंद देव केउं वंशर थिले? भोई डायनेस्टी, गजपति डायनेस्टी, सोमबक्सी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। राइट आंसर इज भोई डायनेस्टी। मुकुंद देव द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा बिलोंग टू भोई डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन: द हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? हीराकुद डैम केउं नदी उपरे निर्मित होइछि? महानदी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या, बैतरणी। राइट आंसर इज महानदी। द हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन: द फर्स्ट ओडिया नोवेल पद्ममाली वाज रिटन बाय हुम? प्रथम ओडिया उपन्यास पद्ममाली काहा द्वारा लेखा जाइतिला? फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, उमेश चंद्र सरकार, गोपबंधु दास। राइट आंसर इज उमेश चंद्र सरकार। द फर्स्ट ओडिया नोवेल पद्ममाली वाज रिटन बाय उमेश चंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन: द फेमस ट्राइबल फेस्टिवल चैती पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब ऑफ ओडिशा? ओडिशार केउं जनजाति प्रसिद्ध आदिवासी पर्व चैती पर्व पालन करती? सौर, बोंडा, जुआंग, गड़बा। राइट आंसर इज सौर। द फेमस ट्राइबल फेस्टिवल चैती पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय सौरा ट्राइब ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच कंट्री हैज नो रिवर एट ऑल? केउं देश रे कोनोसी नदी नाही? साउदी अरेबिया, ओमान, कुवैत,
Yemen. Right answer is Saudi Arabia. Saudi Arabia has no river at all. Next question is who was the first governor of independent Odisha? ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଅସଫ ଅଲି, ଭିପି ମେନନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ. Right answer is Kailasnath Katju. Kailasnath Katju was the first governor of independent Odisha. Next question is in which year was Odisha separated from Bihar and formed as a separate province? କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବିହାରରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1932, 1936, 1949, 1950. Right answer is 1936. In 1936, Odisha separated from Bihar and formed as a new separate provinces. Next question, the concept of fundamental duties was borrowed from which country? Fundamental duties concept କେଉଁ ଦେଶରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା? USA, Germany, Ireland, USSR. Right answer is USSR. The concept of fundamental duties was borrowed from USSR. Next question, the capital of ancient Kalinga during the time of ଖାରବେଳ was dash. ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୀ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ତୋଷାଳୀ, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼. Right answer is ଶିଶୁପାଳଗଡ଼. The capital of ancient Kalinga during the time of ଖାରବେଳ was ଶିଶୁପାଳଗଡ଼. Next question, which one of the following leaders was associated with the Gadar movement but later became a prominent leader in the Indian National Congress? କିଏ ଗଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହୋଇଥିଲେ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲ, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल. Right answer is Lala Hardayal. Lala Hardayal was associated with the Gadar movement but later became a prominent leader in the Indian National Congress. Next question, the Bhitarkanika National Park is famous for which animal species? Bhitarkanika ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, ଓଲିଭ ରେଡଲି ଟର୍ଟଲ, ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ୍. Right answer is salt water crocodile. The Bhitarkanika National Park is famous for saltwater crocodile. Next question, the famous slogan "Freedom is my birthright and I shall have it" was first raised at which session of Indian National Congress? ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇବି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିଥିଲା? 1911 କାଲକାଟା, 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ, 1917 କାଲକାଟା, 1919 ଅମୃତସର. Right answer is 1916 Lucknow. The famous slogan "Freedom is my birthright and I shall have it" was first raised at Lucknow 1916 session of the Indian National Congress. Next question, which place in Odisha is known as the Temple City of India? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ. Right answer is Bhubaneswar. Bhubaneswar is known as the Temple City of India. The Palk Strait separate India from which of the following? Palk Strait ଭାରତକୁ କାହାଠୁ ଅଲଗା କରୁଛି? Maldives, Andaman Islands, Myanmar, Sri Lanka. Right answer is Sri Lanka. The Palk Strait separate India from Sri Lanka. Next question, who among the following was not a member of the Quiet India Resolution passed by the Congress Working Committee on 8 August 1942? 8 August 1942 रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी द्वारा पास होइतिबा क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन रे किए सदस्य नथिले? अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू. राइट आंसर इज श्री राजगोपालचारी. श्री राजगोपालचारी was not a member of a Quiet India Resolution passed by the Congress Working Committee on 8 August 1942. Next question, the blue color of the sky is due to dash. आकाशर नील रंग केउं कारणरू होइथाय? Reflection, refraction, dispersion, scattering. Right answer is scattering. The blue color of the sky is due to scattering. Next question, which revolutionary leader founded the organization Hindustan Socialist Republican Association HSRA in 1928 after the disbanding of HRA? HRA भांगिया परे 1928 मसीह रे केउं विप्लवी नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन प्रतिष्ठा करथिले? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल. Right answer is Bhagat Singh. Bhagat Singh founded the organization Hindustan Socialist Republican Association in 1928 after the disbanding of HRA. Next question, which of the following state in India has the highest number of national park? भारतर केउं राज्य रे सर्वाधिक जातीय उद्यान अछि? आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. Right answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh state has the highest number of national parks. Next question, which of the following lakes is the largest freshwater lake in the world by the surface area? Surface area रे केउंठी विश्वर सबुठारु बड़ freshwater lake? Lake Baikal, Lake Victoria, Lake Superior, Caspian Sea. Right answer is Lake Superior. Lake Superior is the largest freshwater lake in the world by the surface area. Next, which of the following cities is located closest to the Tropic of Cancer in India? एमानंक मध्यरु भारतर Tropic of Cancer ठारु निकटतम सहर केउंठी? अहमदाबाद, कोलकाता, रांची,
Bhopal. Right answer is Ranchi. Ranchi is located closest to the Tropic of Cancer in India. Next, the Bhomokara dynasty ruled over part of the Odisha during which period? Bhomokara ରାଜବଂଶ କେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? Right answer is 8th to 10th century. The Bhomokara dynasty ruled over part of Odisha during 8th to 10th century CE. Next, the Odisha State Legislative Assembly was how many constituency? Odisha State Legislative Assembly रे केतेटा constituency ଅଛି? 140, 147, 150, 135. Right answer is 147. The Odisha State Legislative Assembly has 147 constituency. Next, which article of the Constitution permit the Supreme Court to review its own judgment? संविधानर केउं अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को निजस्व रायर समीक्षा करने अनुमति दिए? आर्टिकल 132, आर्टिकल 137, आर्टिकल 142, आर्टिकल 139. राइट आंसर इज आर्टिकल 137. आर्टिकल 137 of the Constitution permit the Supreme Court to review its own judgment. Who among the following has said that the preamble is the identity card of the Constitution? एमानक मध्यरु किए preamble को identity card of the Constitution बोली कहिथिले? डॉक्टर बी आर आंबेडकर, एन.ए. पल्कीवाला, के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव. Right answer is Pandit Thakurdas Bhargav. Pandit Thakurdas Bhargav said that the preamble is the identity card of the Constitution. Next, which gas is used in artificial ripening of fruits? केउं गैस फल को कृत्रिम भाव में पचाइबा को व्यवहार करा जाए? मिथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपेन. Right answer is ethylene. Ethylene gas is used in artificial ripening of fruits. Next, which sector contributes the highest to India's GDP today? आज भारतर जीडीपी रे केउं क्षेत्रर अवदान सर्वाधिक अटे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, माइनिंग. राइट आंसर इज सर्विसेस. Service sector contribute the highest to India GDP today. Next, under which constitutional amendment was the voting age reduced from 21 years to 18 years? केउं सांविधानिक संशोधन अनुଯାयी भोट देबार बयस 21 वर्षरु 18 वर्ष को ह्रास करा जायतिला? 42nd amendment, 44th amendment, 61 amendment, 69 amendment. Right answer is 61 amendment. Under 61st amendment, the voting age reduced from 21 years to 18 years. Next, which of the following is not mentioned in the Constitution of India? भारतर संविधान रे निम्नलिखित मध्यरु केउंठी उल्लेख नाही? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. Right answer is deputy prime minister. Deputy prime minister is not mentioned in the Constitution of India. Next, which of the following writs is known as the bulwark of individual liberty? एमानक मध्यरु केउं रिट को व्यक्तिगत स्वाधीनतार दृढ़ सुरक्षा भाव में जनाशुना? मांडामोस, सर्टियोरारी, हबिस कॉर्पस, को वारंटो. Right answer is हबिस कॉर्पस. Habeas corpus known as the bulwark of individual liberty. Next, the money bill can be introduced in Lok Sabha only with the prior recommendation of dash. मनी बिल केवल कहा सुपारिश रे लोकसभा रे प्रस्तावित करा जाय परिबो? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा. राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. The money bill can be introduced in the Lok Sabha only the prior recommendation of the president. Next, which constitutional amendment introduced पंचायती राज institutions in India? केउं सांविधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्था प्रचलन होइतिला? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट. राइट आंसर इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट. 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. नेक्स्ट, हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? किए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करे? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, WTO. राइट आंसर इज UNDP. UNDP publishes the Human Development Report. Next, who was the Ganga King credited with the construction of the famous Jagannath Temple at Puri? पुरी रो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निर्माण पर क्रेडिट मिलथिया गंगवंशीय राजा किए थिले? अनंत बर्मन चोड़गंग देव, कपिलेन्द्र देव, नरसिंह देव वन, राजा राजा देव. राइट आंसर इज अनंत बर्मन चोड़गंग देव. अनंत बर्मन चोड़गंग देव credited with the construction of the famous Jagannath Temple at Puri. Next, what is the current poverty line in India based on? इंडिया करेंट पॉवर्टी लाइन कहा उपरे बेस करुची? इनकम मेथड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पर कैपिटा जीडीपी. राइट आंसर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. करेंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, व्हिच प्रोग्राम रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन इन इंडिया? क्यों प्रोग्राम प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करिछि? नीति आयोग, भारत निर्माण, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर मिशन. राइट आंसर इज नीति आयोग. नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमिशन इन इंडिया. Next, which schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding disqualification on ground of defection?
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ଦଳତ୍ୟାଗ କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 8th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍, 9th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍, 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍, 11th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍। Right answer is 10th schedule. 10th schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding disqualification on ground of defection. Next, what is the rank of India in Human Development Index 2023? Human Development Index 2023 रे इंडिया रे रैंक केते? 103, 132, 135, 140. Right answer is 132. India's rank in the Human Development Index 2033 is 132. Next, the procedure for the amendment of the constitution is taken from which country's constitution? संविधान संशोधन प्रक्रिया क्यों देशर संविधान नियाଯାଇଛି? यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए। Right answer is South Africa. The procedure for the amendment of the constitution is taken from South Africa. Next, the energy of the sun is produced by dash. सूर्यर शक्ति कहा द्वारा उत्पादित हुए? Combustion, nuclear fusion, nuclear fission, chemical reaction. Right answer is nuclear fusion. The energy of the sun is produced by nuclear fusion. Next, which part of the human brain controls involuntary actions like heartbeat and breathing? मଣିष मस्तिष्कर केउं अंश हृत्स्पंदन एवं श्वासक्रिया भली कार्य को नियंत्रण करे? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा, थैलामस। Right answer is medulla oblongata. Medulla oblongata controls involuntary actions like heartbeat and breathing. Thanks for watching. जय जगन्नाथ।